questions, ma'am. There is Okay. long list of questions. Okay. Let's address those questions. चलिए बताइए. Have you spare time for me? Of course, definitely. Okay, ma'am. Go ahead and ask Manju the questions. Yes, ma'am. तंबाकू के अलावा अन्य तरह के केमिकल वाला हुक्का भी इस्तेमाल किया जाता है. Okay. Ma'am, my question is, sometime I never I don't have find out the subject. You can't find out the subject, but इसको तो पहले English में translate करना पड़ेगा, right? That's my question. कि इसमें मैं question कैसे ढूंढूं? Question या इसको पहले subject. Okay, so पहले हम इसको translate कर लेते हैं English में, okay? मंजू? जी. Okay, so you said तंबाकू के अलावा और भी कई chemicals हुक्का में यूज किए जाते हैं. अन्य तरह के केमिकल वाला हुक्का भी इस्तेमाल किया जाता है. Okay. So we can roughly translate it to this. Okay, Manju? Yes, ma'am. Many chemicals are also used in hookahs other than tobacco. Okay. So यहाँ पे तो बहुत ही simple है हमारा, बताइए. Ma'am, when we take up this type of sentence, how we can assess we will start there or it or direct subject? Direct subject, ये तो थोड़ा सा practice से ही हो पाएगा. This is not something that I can give you a formula for it and you will say, okay, अगर ये formula लगा देंगे, then we can translate the entire sentence into English by knowing what we are starting with. But you can form it with a dummy pronoun also if you want. It's not that you cannot. But I formed it like this. What you have to go by when you are translating something from another language into English, what is the main rule is that the meaning should be preserved. Okay, हमारा गोल ये होता है कि मीनिंग को इंटैक्ट रखे. जैसा मीनिंग उस लैंग्वेज में आ रहा है, जितना क्लोज हो सके उतना ही क्लोज हम इस लैंग्वेज में लाने की कोशिश करेंगे. So here I have started with the subject, that is many chemicals. All right. Yes. So many chemicals is functioning as the subject, are is functioning as the verb. Okay. Right. Good. Yes. Any other question, Manju? Okay, ma'am. I will try first. Then I will ask you tomorrow. Okay, definitely. Any other questions, guys? Anyone else? Tanisha? Yes, ma'am. Ma'am, could you please correct me my sentence? My first is we can't get success until we work on our weakness. Until we work on our weakness. Is it correct, ma'am? हम सक्सेस नहीं मिलती हमें जब तक हम अपनी वीकनेस पे वर्क नहीं करते. How we can tell this sentence? Translate this sentence in English. We can't get success until we work on our weakness. Yeah, this is correct. Is it correct? Yes. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. And next one is earlier I used to hide myself from people that I am learning English. But now I think that if I get happiness to learn one second, Tanisha, one second. Earlier I used to hide myself from people that I am learning English. Learning English.
बट मैम इधर मैंने यूज टू और इधर आई एम है, थोड़ा कंफ्यूज है कि मैं पहले अपने आप को Okay, हाइड okay. We करती will we थी will look कि at मैं that. लैंग्वेज First, you सीख tell रही me. हूँ. Okay, earlier first i you tell me. used to earlier I used to hide myself from people that I am learning English, but now I think now I think that if I get happiness to learn new languages, so why don't I learn, and why I will think about others. One second. Tanisha, धीरे धीरे. Ma'am, your Let. screen is not visible from to me. Okay, 1 second. I'll just reshare and you speak a little slower. Okay, Tanisha. Oh, Uh, sorry, ma'am, you are writing. Sorry, yes. ma'am, If I because think. you, No, no. yeah, If I don't write, I won't be able to tell you. I yeah, think that ma'am. if I get happiness to learn new language. Uh, if I get happiness to learn new languages, so why don't I Why don't I learn, learn? and why I will think about others. Why will I? I'll think about others. I'll ma'am will I नहीं लिखा. Okay, yeah, will I आएगा I think. Why will I think Think about? about others. Okay. So this is your sentence, right, Yes, Tanisha? ma'am. Yes, So ma'am. देखिए, start से start करते हैं. Earlier I used to hide myself from people. इसका मतलब होता है मैं खुद को छिपाती थी. I मैम used to कैन hide मैम myself. ओके मैम, मैं एक बार अपना हिंदी में बोलूँ. मैं पहले अपने आप को छुपाना मीन्स अपने आप को बताती नहीं थी आई एम व्हाट आई एम डूइंग. सो Yeah, yeah, अर्ली I मैं अपने आप understood. को No, no, छुपाती I थी have कि मैं. understood the entire sentence. You don't have to tell me, Tanisha. ओके मैम. I'm just helping you to change it, okay? So ओके I'm मैम. just explaining. Earlier, I used to hide myself from people का मतलब होता है कि मैं खुद को छिपाती थी. आप खुद को तो नहीं छिपाती थी. आप इस हम्म. फैक्ट को छिपाती थी कि आप इंग्लिश सीख रही है, right? You मैम used to योर hide this. स्क्रीन अगेन अनेबल टू आई एम अनेबल टू सी. Okay, so basically, Tanisha, what you are trying to say is कि आप खुद को नहीं छिपाती थी, आप इस फैक्ट को छिपाती थी कि आप इंग्लिश सीख रही है. सो यहाँ पे हाइड माई सेल्फ फ्रॉम पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सो आप क्या लिखेंगे? अर्लियर आई यूज्ड टू हाइड द फैक्ट दैट आई एम लर्निंग इंग्लिश. ओके, और किससे ओके. छिपाते थे? आप पीपल से छिपाते थे. सो आई यूज्ड टू अर्लियर आई यूज्ड टू हाइड द फैक्ट फ्रॉम people पीपल. that I am learning, that I am learning English. But now I think that if I get happiness to learn, आप बोलना चाहते हैं अगर मुझे खुशी मिलती है. So, but now I think that if I get happiness, यहाँ पे होगा to learn नहीं होगा from learning. So I think, but now I think that if I get happiness from learning new languages, so why don't I learn? Why don't nahi aayega? Why shouldn't? Okay. Shouldn't I learn? And why will I think about others? यहाँ पे why will के जगह पे better होगा why should I think about others? Okay. Yes, ma'am. So this can be your Ma'am. sentence. Yes. And ma'am, one more. Good morning, ma'am. इसी में ही है. Good morning. One Ma'am. by one. Yes, one by one, Ma'am, guys. one thing, ma'am. Ma'am, related to this sentence, ma'am. Yes, yes. Meera? Ma'am, can we use used to with earlier, ma'am? Earlier, I used to. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. But ma'am, yesterday you told us that earlier means आजकल. नहीं, earlier means आजकल मैंने नहीं बोला. That was a different word. I'm 100% sure it's not earlier. It was, I think, lately. Yes, lately. I wrote lately. Okay, ma'am. Yes, it's okay. lately. Earlier का मतलब पहले. Okay, पहले के दिनों में. Okay, ma'am. Okay. Sorry, But ma'am. चलिए, ma'am, no problem. इसको Yes. क्या बोलेंगे? Ma'am, मैं I write अब मैं down सोचती हूँ. अब मैं जैसे मैंने सोचती हूँ. मैंने कैन वी से यूजुअली आई थिंक या ओनली आई थिंक ये No, लिखना now है. I think, now it's fine. Now I think. ओके मैम. यस मैम. Okay. थैंक यू मैम. Most welcome. Yes, anything else? बताइए. No, I think it's not required to use why should I twice.
Okay, earlier I used to hide the fact from people that I'm learning English, but now I think that if I get happiness from learning new language, so why shouldn't I learn and why should I think about others? Ma'am, You have to why kind should of you. Yes, ma'am, why should bother others? Why should bother? why should we bother about others? That is also correct. But No, Karthik, no. this is I'm negative and saying this is positive, right? So how can you merge them into one? Like, so why shouldn't I learn and think about others? Then it will be why shouldn't I think about others? Okay. I'm Like the saying why meaning, shouldn't I learn and think about others? Is it correct? then it will be what you are trying to say is if I omit this part, uh, if I omit this part, what happens is it takes this part. Why shouldn't I? So it means why shouldn't I think about others? Yeah. Understood, Karthik? Why shouldn't I Because this think? is negative. Yes, yes. That's why. And ma'am, one more anxious. Can we use only in a negative means bad things में? जैसे I think day before yesterday you have teach this vocabulary. You have taught this No, no, vocabulary. not why. Why will it be negative? Anxious तो negative नहीं है. किसी भी She तरीके से was use कर सकते हैं. she was anxious about not making her appointment on time. And can we Yeah, say I'm very anxious to achieve my goal? Is it wrong? about, not to. About, but the point is, Tanisha, a goal is a very far away thing, okay? And Okay. anxious मतलब होता है कि मैं थोड़ी what to say? I am चिंतित. in a hurry as well and चिंतित भी हूँ, but I am also in a hurry to do that thing, okay? So I can say about positive things, छोटी चीजें आप बोल सकते हैं, like she was very anxious Her the health. uh, about her health बोल सकते हैं, about the About her career. part, about her career बोल सकते हैं. Yes, all of these things you can say, okay? Doesn't really have a negative meaning to it. It just means कि कोई person थोड़ा distressed है, थोड़ा anxiety stricken है, okay? Yes, ma'am. And when ma'am spill, yesterday you taught that spill. Spill, Spill means we have container. Then we use this word. right, So इस थोड़ा समझ नहीं आया मैम ये जैसे सेंटेंस था I spilled the coffee on the table. right. So कंटेनर में कॉफी रहता है ना, कॉफी एक Hmm. सब्सटेंस है जो कि क्या बोलेंगे उसको, So इस spill का स्पिल क्या use है? एक्चुअली यूजुअली इसका मतलब होता है बिखर जाना. लाइक कोई चीज अगर बिखर गई हो तो उसको हम स्पिलिंग बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं ना बिखर गई. सो दैट इज Okay, स्पिलिंग okay, बेसिकली. एंड okay. यूजुअली used with powders and liquids or small beady items in a container. Okay. सोचिए आप किसी कंटेनर में कोई पाउडरी सब्सटेंस या कोई लिक्विड या फिर कोई छोटे बीडी आइटम्स ले रहे हैं. बीडी मतलब बीड्स जैसे छोटे छोटे आइटम्स ले रहे हैं और वो गिर जाता है, तब हम स्पिल्ड बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव स्पिल्ड द pulses. I think Manju gave this example. I have spilled powder के लिए आप बोल सकते हैं I have spilled the coffee. Like the coffee जो powder form में आता है. You can say again, you can say I have spilled the coffee and it can be like made coffee with milk and sugar and everything. Liquid form में जो रहता है. So for all of these things you can use spill. Okay. Okay. Tanisha. Container से गिर जाना मतलब कुछ spell. हाँ, कुछ भी लेना. गिरेगा तो नहीं होगा. Of ठीक. course, जैसे कि अगर बड़े बड़े चंक्स के लड्डू गिर गए, so you won't say that I have spilled the laddus. Okay. So Okay, ma'am. like smaller things. Good morning, ma'am. Got it, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Thank you, yes. ma'am. Most welcome. Yes, Anupam, good morning. Do you have a Ma'am, question? ma'am, I have Ma'am, a अगर question. water गिरी है तो बिल्कुल बिल्कुल वाटर के लिए भी बोल सकते हैं I spilled the water. okay. Okay. Yes, बताइए. Soumya has a question. No, ma'am, please check it. He has tired from work. मतलब वह काम से थक गया है. He It is is right. tired. He is tired from work. Okay. He is. Yeah, He is. has. Has नहीं होगा. Has नहीं होगा. He is. And he is pleased me. He has pleased me. Has. So Has pleased me.
सो कैसे हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? सौम्या, देखिए दो टेंस होते हैं हमारे इंग्लिश में, जो एक होता है सिंपल टेंस, ओके, और दूसरा होता है परफेक्ट टेंस। ये जो सिंपल टेंस होता है, इसका मतलब ये होता है इसमें एक ही वर्ब होता है, सिर्फ वन वर्ब होता है, और वो एकदम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में होता है, ओके। इसको हम सिंपल टेंस बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इस तरीके का। जैसे कि आई ईट आइसक्रीम, दे गो टू वर्क, वी स्लीप ऑल डे। इसमें क्या हो रहा है, एक एक वर्ब यूज हो रहा है, गो, ईट, स्लीप, और उसको हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस में जिसमें भी आपको रखना है उसी में रखेंगे। इसको बोला जाता है सिंपल टेंस। अंडरस्टूड सौम्या? ओके। और एक होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हैव स्लैश हैज स्लैश हैड प्लस V3, ओके। So I have eaten, I have gone, they have slept, they आई had नो मैम, beaten. बट इन हिंदी हम इसको जैसे हिंदी में है, वह काम से थक गया है एंड वह मुझसे प्रसन्न है, तो कैसे जानेंगे कि ये सिंपल में आएगा और ये क्या कहते हैं टेंस में आएगा? जी बता रहे, ओके सौम्या, 1 second, let me just explain the entire thing. So ये perfect tense है, right? So have और has और had plus V3. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं he is tired from work. आपको लग रहा होगा कि ये जो tired है ये verb है, right? तभी यहाँ पे has होना चाहिए, but ये actually adjective है, ओके सौम्या, ये एक्चुअली एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है जो कि सिंपल टेंस में ही हो सकता है, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है जो कि इज है, ओके। अंडरस्टूड सौम्या? अब यहाँ पर जो हैज है ये हमारा ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, ओके। एंड ये जो प्लीज्ड है ये हमारा V3 है, ये वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में है। इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अंडरस्टूड? जब आप हिंदी में भी बोल रहे हैं वो काम से थक गया है, सो थक जाना इज नॉट द वर्ब देयर, वो हिंदी का भी क्रिया नहीं है, राइट? वहां पे भी वो अलंकार का ही काम कर रहा है कि वो थक गया है, ओके। सो सिमिलरली मुझसे प्रसन्न है, वो मुझसे प्रसन्न है, he has pleased me, वो मुझसे प्रसन्न है का मतलब he has pleased me नहीं है, वो मुझसे प्रसन्न है का इंग्लिश होगा he is pleased by me। इसका ये है आपका सेंटेंस जो आप बोल रहे हैं वो मुझसे प्रसन्न है, इसमें भी सेम हो रहा है, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट? यही सिर्फ वर्ब है जो सिंपल प्रेजेंट है, प्लीज जो है वो एडजेक्टिव है। अंडरस्टूड? सो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ हिंदी में, उसने मुझे प्रसन्न किया, उसने मुझे प्रसन्न किया। सो वो प्रसन्न कर रहा है, इसीलिए जो प्रसन्नता है, प्लीजिंग है, इट इज बिकमिंग अ वर्ब, क्रिया। अंडरस्टूड सौम्या? या So difference between this and this sentence, that is in present perfect. Clear? ओके, थैंक यू मैम। Most welcome. Yes, Vishakha, बताइए। Good morning, ma'am. Good morning, good morning, Abhay. We have not started. We are just discussing a few doubts Yes, that ma'am. people have. मैम एक जो Can you hear me, ma'am? पैसिव होता है, I was hearing, ma'am. Yes, yes. Any questions you have, you can also ask. Okay, Abhay? Yes, ma'am. I have no question, ma'am. But Okay. today, what is the topic, ma'am? We will continue with pronouns. So we will start with Okay. reciprocal, I think. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes. Okay. चलिए विशाखा Ma'am, बताइए। Yes. ma'am, this type of sentence, ma'am, Yes. sometimes confusion to noun and adjective. If Adjective and noun, verb. and means, ma'am, verb and adjective or a Right. noun. Right. Exactly. Sometimes, This is true. जैसे मैम I agree. Sometime I speak I am agree, but not I am not agree is the incorrect. Yes. I agree. Absolutely. It should be I agree. Why? I will tell you why it should always be I agree. I agree. Yes, ma'am. And I Yes. am agree. Right? So I am agree Yes, is definitely wrong. So ये Wrong, गलत ma'am. क्यों है? Why is this wrong? Because in simple present tense, you are trying to make a simple present tense sentence. Only one verb will be there and it will be in the simple present tense. But here you are using two verbs.
am and agree, both are verb and both are in simple present. So this is incorrect. In simple present Incorrect. tense, we only use one verb that is in simple present. So in the first sentence, you can see I agree, only agree is the one verb used and it is in simple present. That is why it is correct. Okay. Yes, ma'am. So you have to understand the structure very well. Without agree is also verb, ma'am. Absolutely, because agree is also verb. But यहाँ पर अगर ill लगा देते, I am ill, वो correct हो जाता, क्योंकि ill क्या हो जाता है, हाँ, adjective हो जाता, right? yes, ma'am. Then it would Yes. have been correct, I am ill. But I am agree नहीं होगा, क्योंकि double repetition of verb नहीं हो सकता simple present में. Okay, मैम yes. सिंपल Thank प्रेजेंट you, ma'am. में पार्टिसिपल वर्ब यूज किया जाता है, इज के साथ टायर्ड है इसलिए ये पूछ रहे हैं। adjective है. No, ये participle verb नहीं है, ये adjective है, सौम्या. ये participle verb है. This is past participle जो कि हमारे perfect tense में यूज हो रहा है. Okay, ये हमारा adjective है, ये किसी भी तरीके से verb नहीं है. थर्ड ओके, सो हाउ टू रिकॉग्नाइज, मतलब कैसे पहचानूं मैं पार्टिसिपल ये है तो या एडजेक्टिव है? ये तो अगर बहुत हम ही yes I ये am बहुत sorry ma'am, you मैम can she no continue. speaks very sweetly. हाँ मैं कैसे पहचानूं इसे? no I'm Sorry. telling yes no it's very easy to identify. I'll tell. Vishaka, do you want to say something? Yes ma'am, I also have same problem. Means Okay, how how to to determine? recognize, yeah, how to right determine. बहुत बहुत सिंपल है, मैं आपको एकदम इजीली बता देती हूँ, बहुत सिंपल है. You have to understand the meaning of subject, object and verb. Subject and object and verb का मतलब क्या होता है, ये पहले आप समझ जाएंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. Subject का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो verb को करता है. He always does the verb. वो verb का जो action होता है वो करता है, इसीलिए उसको subject बोला जाता है. Okay, so ही इज टायर्ड में जब बोल रही हूँ, ये टायर्ड हो मतलब टायर्ड करना, क्या ये किसी को टायर्ड कर रहा है? इज ही मेकिंग एनीवन टायर्ड? नो, राइट, ही इज सिंपली टायर्ड, वो खुद टायर्ड है. सो दिस टायर्ड इज जस्ट डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट. ये कोई वर्ब नहीं है, क्योंकि ये कोई काम नहीं है जो टायर्ड कर रहा है. जैसे ही हैज प्लीज्ड मी में देखिए, ही इज प्लीजिंग, वो प्लीज करने का काम कर रहा है, ही इज डूइंग द एक्शन ऑफ प्लीजिंग. सो जो वर्ब होता है वो हमेशा जो सब्जेक्ट है वो करता है, ही परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. अंडरस्टूड? सो ये टायर्ड जो वर्ड है, इसको तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ही इज नॉट मेकिंग एनीवन टायर्ड, राइट? और ही इज नॉट टायरिंग एनीवन, लाइक he is not performing that action. The tired word is just describing his state, कि वो कैसा है, वो tired है. So this word is describing the subject, so it is actually called a subject complement. We will learn about this later on, about subject complement, object and all of that. और भी clear हो जाएगा आप लोगों के लिए. But that is how you understand that this is definitely not a verb, rather an adjective. Okay, and another way of understanding is if is लगा है, is, am, are, was, were, is, am, are, was, were लगा है, उसके बाद अगर V3 का कोई फॉर्म आ रहा है, so obviously it is simple past और simple present, वो हमारा perfect नहीं है. So इसीलिए V3 नहीं है, ये हमारा what is this? This is adjective. So Adjective. is, am, are, was, were. Okay, अगर ये लगा है और उसके बाद V3 लगा है and after मैम that you see, पैसिव में भी तो ऐसा होता है ना, V3 लगता है या पर फिर वहां पे verb बीन का रहता है, form आता है. बट वहां पे बीन रहता है, यू विल सी वहां पे बीन Yeah. रहता है. ओके, हाँ. सो अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, सो दिस बिकम्स एडजेक्टिव, तब आपको पता चल जाएगा ये एडजेक्टिव है. बट अगर हैज हैव हैड के साथ V3 लगा है, देन यू नो इट इज V3, वर्ब है वो. ओके, एंड बीन आएगा तब जाकर वो पैसिव बनता है. सो बीन रहता है तो हमें पता चल जाता है कि पैसिव है, सो देन वी यूज नहीं V3. मैम, सब में तो बीन नहीं लगता है ना. मीन्स ही Yes, इज ma'am. टायर्ड. Simple. हाँ, ही इज टायर्ड बाय वर्क, तो वो अब वो पैसिव ही हो गया ना सेंटेंस. He is tired by work. One second. तो थका हुआ है. हाँ, One Very second. confusing. One second, guys. मेरा यही क्वेश्चन है, मुझे यही डिस्टर्ब करता है हर बार. हाँ. One second, guys.
he is tired, अगर मैं ये बोलूं, so इसका passive हो ही नहीं सकता. We cannot make passive of this because this is like this does not have an object. The sentence does not have an object. Okay. No, by work. So काम ने उसे थका दिया मैम. By work भी मैं अगर लिखूं, then it is not passive. Okay. It is not passive. If I say he is tired by work, this by work is simply working as prepositional phrase. This doesn't make the sentence passive. Okay. Like what to say? One second. Work. मैम इसका तो ऐसा हो गया, वर्क बाय टायर्ड बाय हिम. Yes, exactly. ये नहीं हो सकता. Okay, this is not a passive sentence. Yes, but I will give you a work. हो ओके, क्योंकि टायर वर्ब नहीं है इसलिए मैम. जी बिल्कुल. और जब क्या होता है, जब हम एक्टिव पैसिव अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे सेंटेंस, कई बार तो वर्ब होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है. लाइक वी हैव डन दिस वर्क, एंड पैसिव में वही होगा वी आर डन दिस वर्क. ओके, तो तब नहीं कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. नो 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 नो. अगर मैं बोलूं वी हैव डन दिस वर्क, वी हैव डन दिस वर्क, सो यहाँ पर क्या है देखिए, सेंटेंस है. Yes, exactly. Very good, Maliha. The work, sorry, this work होगा. This work had done by us. Had been done by us. Sorry, had नहीं, has been, right? Simple present perfect. So this work has been done by us. This should be the structure. Understood? नहीं मैम, ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ. एक सेंटेंस ऐसा भी है, दिस वर्क इज डन बाय अस. दिस वर्क इज डन बाय अस, वो पैसिव फॉर्म है. आप बोल सकते हैं दिस वर्क इज डन बाय अस. दिस वर्क is done by us. Sorry, you cannot make this sentence. This work is done by us. This is incorrect. Okay, आप ma'am. नहीं बना सकते. Okay, this work is done by us नहीं हो सकता. You have to say this work has been done by us. Okay, ये is नहीं आ सकता. V3 के साथ is नहीं आता है. V3 के साथ is कभी भी नहीं आएगा. मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है सेंटेंस, पैसिव में तो आ सकता है ना मैम. पैसिव में नहीं आ नहीं, सकता. पैसिव में भी नहीं आ सकता है. पैसिव में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस बनाऊं आपके लिए, जैसे कि एक तो ऐसा है कि ही इज टायर्ड. अगर मैं बोलूं ही इज टायर्ड बाय वर्क या व्हाटएवर, राइट? या फिर द वर्क, या यही लिख देते हैं, ही इज टायर्ड बाय वर्क. ही इज टायर्ड बाय वर्क. सो ये क्या है, ये सेंटेंस हम पैसिव बना ही नहीं सकते. दिस सेंटेंस कैन नॉट बी मेड इनटू पैसिव. क्यों? इसका वजह क्या है? क्योंकि ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और इज ही सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है इस सेंटेंस में, और कोई वर्ब नहीं है. सो जब सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है सेंटेंस में और कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है हमारे सेंटेंस में. देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. अ सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू पैसिव. सो ये हमेशा सिर्फ एडजेक्टिव ही रहेगा, ये कभी भी वर्ब नहीं बनेगा. ओके, अंडरस्टूड? एंड अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे कि he eats an apple, if you make a sentence like this, then it is in simple present tense, and then we get our subject. Eaten by him. Yes, then we get our subject, then we get our verb in the present form, then we get our object, then we can make it into passive. And apple eaten by him. An apple is eaten by him. Is that the formula? Yes. Has been eaten by him. No. One second. I only got confused because of so much discussion. Just give me 1 second. Okay.
Just give me 1 second, guys. And let me open the active and passive rules. मैम प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है मैम. हाँ मैम, Yes, वो एक्चुअली yes, was eaten, right? No, हाँ वो तो यस नहीं मैम, सिंपल प्रेजेंट को जब हम पैसिव में कन्वर्ट सिंपल करते हैं तो प्रेजेंट मैम इस के सिंपल साथ पास्ट आर में के साथ कन्वर्ट वही होता है थ्री तो मैम. यूज होता है ना मैम. Ma'am, take one by one. yes, Student. please guys, one by one. Just 1 second, मुझे active and passive का थोड़ा सा वो देखने दीजिए. Rules, I am really confused right now. एक सेकंड दीजिए. I didn't know ABCD of active passive. Please don't worry guys, ये सब हम करेंगे. Okay, we will discuss all this when we are doing active and passive voice, which is very far away. Gathers flower are Ma'am. gathered by her. Yes, okay, I got it. Like what you're saying is अगर present tense में है तो फिर तो is and are use हो सकता है. हाँ वही बोल रहे Right, हैं. right. Yes, that is completely Ma'am. true. Yes, She was puzzled, so puzzled is also adjective. she was puzzled. Yes, बिल्कुल adjective है. Okay, but अगर मैं बोलूँ she puzzled her, then वो adjective नहीं है, वो verb है. Okay, clear? यस, थोड़ा सा वेट कीजिए गाइस, थोड़ा स्ट्रक्चर में जाएंगे, थोड़ा सिंटेक्स एंड इन्फ्लेक्शन में जाएंगे तो ये सब चीजें और क्लियर हो जाएंगी. ओके, थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अभी कंप्लीटली फोकस करते हैं. लेट्स कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा, देन वी विल मूव ऑन टू दिस काइंड ऑफ सिंटेक्स एंड इन्फ्लेक्शंस. ओके, and if you are making into passive as well, Vishakha, I think Vishakha was asking, no, someone else is. Yes, ma'am. Everyone is asking. Everyone was asking. तो इसको अगर मैं लिखूं, an apple is eaten by him, and if I write a sentence जिसमें लग रहा है कि हो सकता है मतलब verb but है नहीं, जैसे कि he is tired, so इन दोनों का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? You can see here अगेन वही आपको देखना है कि मीनिंग क्या हो रहा है. राइट, ही क्या कर रहा है? ईट कर रहा है. ही इज डूइंग द वर्ब ऑफ ईटिंग. यस, Apple is object, ma'am. There is no object. Yeah. But यस, हाँ, वो तो है ही, देयर इज नो ऑब्जेक्ट. पर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मीनिंग से पता कीजिए. ही इज द सब्जेक्ट बिकॉज ही इज डूइंग द एक्शन ऑफ ईटिंग. ही क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है ईट करने का. राइट, किसको कर रहा है? एप्पल को ईट करने का एक्शन कर रहा है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमेशा रिसीव्स द एक्शन. राइट, द ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिसीव्स द एक्शन पैसिवली. So in this sentence also, in the passive sentence also, you can say an apple is eaten by him. So by him है, so he is functioning. The object actually is the active agent in passive sentences, right? So ये जो object है, ये eat कर रहा है apple को, right? So ये इस action को कर रहा है, but यहाँ पर ये जो tired है, ये कोई action नहीं है, इसे कोई कर नहीं रहा है. This वो state है, ma'am. verb is, State है. ma'am, Yes. this verb is intransitive. That's why Yeah, it intransitive. cannot be make a passive voice. Not intransitive, not intransitive. Intransitive verbs, Manju, are action verbs that do not have an object. Like they died. They died. They died का क्या होगा? इसमें ये die करना is dying is an action verb, right? ये एक action verb है, कोई action हो रहा है, but इसका कोई object नहीं है, ये किसी पर किया नहीं जा रहा है. Yes, Right? yes. So one this time kind of only. verb is called intransitive. This kind of verb which is linking the subject with the rest of the sentence without the use of another action verb or another object, this kind of verb is called an auxiliary or a linking verb. Okay, so Yes. intransitive थोड़ा different है और auxiliary, but you are right, क्योंकि intransitive and auxiliary दोनों को ही हम change नहीं कर सकते हैं नहीं कर passive में. सकते, ma'am. Yes, yes. बिल्कुल. That's why. So 3 types of sentences we cannot change. One is if it has a linking verb, only a linking verb. Okay, no action verb. Second Yes. is if it has an intransitive verb, like they died. And third is when it has a reflexive pronoun. So I love myself. इसको हम change नहीं कर सकते passive में because the subject and object are the same person. Reflexive Yes. pronoun. Yes. So इन तीनों options में हम change नहीं कर सकते हैं passive voice में, इन तीनों sentences को. Okay, so we will do these things guys when we are doing active and passive, और clear हो जाएगा धीरे धीरे. Okay, थोड़ा Yes, अच्छे ma'am. से तो like try अभी and के लिए मैम yes. ऐसा मान सकते हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो उसे हम नहीं कर सकते पैसिव में ट्रांसफर.
सब्जेक्ट तो नहीं, एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। मैम ऑब्जेक्ट। एग्जाम क्या है? एग्जाम क्या है? एग्जाम, हाँ एग्जाम एग्जाम जैसे EXAM, हाँ एग्जाम मतलब जैसे परीक्षा। जैसे एग्जाम शुरू हो चुकी है तो Oh, एग्जाम the हैज बीन exam has स्टार्टेड. started. What part of speech? What part of speech? मैम नाउन के बारे जैसे में पूछ रही है, एग्जामिनेशन नाउन। Noun, noun. एग्जामिनेशन या Yes, noun. नाउन ओके Okay. जैसे देखिए एग्जाम किसी, स्टार्ट हो चुकी है तो yes, एग्जाम हैज अनुपम, बीन स्टार्टेड. yes, exam has been started. हम बोल सकते हैं exam is the noun, has been started. तीनों के तीनों verbs है, passive में है. Exam has been started by someone. Okay. ओके अनुपम, यस अनुपम और एक चीज आप देखिए, नोटिस कीजिए, नाउन किसी चीज के नाम को बोला जाता है। अगर मैं किसी चीज को एक नाम दे दूं तो उसको मैं नाउन बोलती हूँ, राइट? इट कैन बी अ सिचुएशन एज वेल। एग्जाम क्या है? एक सिचुएशन है। कैसा सिचुएशन है? सब आते हैं एक रूम में, आकर बैठकर लिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आंसर करते हैं, दैट इज एन एग्जाम। सो उस सिचुएशन को एक नाम दिया गया है जो कि एग्जाम है या एग्जामिनेशन है। So that is why it is a noun. Understood, Anupam? अंडरस्टूड. So what you guys do is parts of speech बहुत अच्छे से practice कीजिए ताकि parts of speech distinguish करने में कोई problem ना हो sentence में. Okay, so try and practice a lot of parts of speech. Like एक क्या कीजिए, take a paragraph from Google, कुछ भी paragraph उठा लीजिए, वहां से आप खोद के निकालिए। ओके, ये मेरा लग रहा है ये नाउन है, ओके ये एडजेक्टिव लग रहा है, ये प्रोनाउन लग रहा है, ये किस टाइप का प्रोनाउन है, ये किस टाइप का नाउन है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, then you will see that it becomes so much easier for you to identify the parts of speech, and later on when we are making sentences, talking about sentence structures, it will be very very easy for you guys to understand those sentence structures. All right, yes guys, I hope this is clear. Yes Okay, ma'am, ma'am. please Yes, start ma'am. pronoun. चलिए, very nice. I always confuse adjective and adverb. Adverb shows the quality of adverb. Of And a verb, adjective, or another adverb. We have not moved to those things. We will move. Okay, we will go to those things. अभी भी बहुत time है, guys. Let's go slowly. Okay. So what you guys do is, अभी तक हमारा noun खत्म हो गया है और pronoun भी खत्म होने को ही है. It's a huge part. Noun and pronoun is a huge part. आप लोग उस पे जितने आपको एक्सरसाइजेस मिलते हैं आप कीजिए, जितना हो सके नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए एक सेंटेंस में। अगर मैं आपको एक पैराग्राफ दे दूं, आप उसमें से हर एक नाउन खोद कर निकालिए, दैट आई विल फाइंड ईच एंड एवरी नाउन फ्रॉम दिस Yes, ma'am. पैराग्राफ। Please ओके, give एंड a देन यू good. ट्राई टू डिस्टिंग्विश कि ये कौन से टाइप का नाउन है, ये कौन से टाइप का नाउन है। सिमिलरली एक पैराग्राफ में हर एक तरीके का आप प्रोनाउन निकालिए और देखिए कि ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है, ये कौन से टाइप का प्रोनाउन है, राइट? practice like this. Once you start practicing like this, you will see कि बहुत like आप में भी 10 पैराग्राफ ऐसे कर लेंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा नाउन और प्रोनाउन में। Okay, so I can only give you the rules and everything, I can explain everything, but practice only you have to do. And if you don't practice, then you will forget the rules for sure, 100%. क्योंकि इतने rules से याद रखना possible नहीं है, guys. You have to like practice and practice so much that it becomes your like, what to say, unconscious habit. चलिए, let's continue then, guys. So reciprocal pronouns हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। कुछ है नहीं reciprocal pronoun में, very very simple. Each other, one another, इन्हीं को reciprocal pronoun बोलते हैं. So basically, when do we use reciprocal pronouns? When two people are there, two people doing the same action to each other. दो लोग हैं जो एक एक्शन, सेम एक्शन एक दूसरे पर कर रहे हैं. So they टॉक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात करते हैं। सो ये भी इससे बात करता है, ये भी इससे बात करता है, दे लव वन अनदर। दो लोग हैं, ये भी इससे प्यार करता है, ये भी इससे प्यार करता है। सो द एक्शन इज रेसिप्रोकल इन नेचर, राइट? सो इसीलिए इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है। Nothing else, there is nothing else to explain in reciprocal pronoun. And reciprocal pronoun हम practice भी नहीं करेंगे because each other and one another are the only options and synonymous है, कोई भी use कर सकते हैं आप sentence में, गलत नहीं होगा। So we cannot even practice it, it will make no sense. Okay, हर एक में each other ही आएगा। So I hope reciprocal pronoun clear है guys. Any questions, any doubts from reciprocal pronouns? No, ma'am. Okay, चलिए. So we will move on to the next kind of pronoun. So what are the ones that are left?
Distributive we have done, right? So out of the 10 pronouns, I think we have done 9. Personal, reflexive, intensive, emphatic, impersonal, dummy, indefinite we have done, interrogative we have done, distributive we have done, reciprocal or demonstrative. Sab ho gaya, sirf relative baki hai, right? Okay, so we will start with relative pronoun today, and this is a very, very important part of pronoun because this is the most confusing of the, like, out of all the pronouns. And not just that, it is also very, very important. Okay, so relative pronoun. So relative pronoun क्या करता है? दो चीजों का काम करता है. Okay, relative pronoun has two functions in a sentence. What are the two functions of a relative pronoun in a sentence? First, it works as a pronoun, of course, क्योंकि इसका नाम ही pronoun है. And second, it functions as a conjunction in the sentence. दो तरीके से काम करता है. एक तो ये conjunction का काम करता है और दूसरा ये pronoun का काम करता है. So in both ways, a relative pronoun is functioning in a sentence. A relative pronoun is a type of pronoun used to connect a relative clause, also known as an adjective clause, to the main clause in a sentence. ये clause और clause क्या होता है? What is a clause basically? If I write anything, if I say, for example, I apple, and I say I eat an apple, and if I say I eat, I've written three sentences here. Let's not call them sentences. I've written three things here. I apple, I eat an apple, and I eat. Out of these three things, which of these are not a sentence? इनमें से कौन-कौन से sentences नहीं है? First one is not a sentence. Okay. And anyone else? No. Third one. I eat, are ma'am, sentence, clause. I The- eat means clause, ma'am. Clause. Okay, so both are sentence. Some people are saying कि last वाला clause है. Some people are saying it's not a sentence. So I will explain कि sentence का definition क्या है. Okay, that is why I wrote this. The easiest definition of sentence is that it should have a subject and a verb. A subject and a verb, और कुछ नहीं चाहिए होता है एक sentence बनाने के लिए. एक subject और एक verb चाहिए होता है. And it should be meaningful. This is the easiest definition of sentence in the English language. और कुछ है ही नहीं. So you can see when I say I eat, इसमें एक subject है जो I है जो eat करने का काम कर रहा है. So एक verb भी है, right? So subject plus verb आ रहा है और इसका meaning भी निकलता है. इसका मतलब भी होता है कि मैं खाती हूँ, right? So I eat is definitely a subject. Sorry, a sentence. Okay. I eat an apple is also a sentence, but here we have three parts: subject, verb and object. क्या खाया जा रहा है वो भी specify कर दिया गया है, right? So this is also a sentence, but this is not a sentence because यहाँ पे subject तो है but verb नहीं है, right? So on and so forth. But now you can why am I explaining this? Because clause का भी definition यही है. Clause is also a part of a sentence that has a subject and a verb. A subject and a verb. But sentence में क्या है? Sentence should always make sense on its own, right? अगर मैं I eat बोलूं तो इसका पूरा पूरा मतलब निकलता है, okay? But अगर मैं कुछ और टाइप का सेंटेंस बनाऊं जिसमें सोचिए एक सब्जेक्ट भी है एक वर्ब भी है बट उसका मतलब नहीं आ रहा है, it does not make sense on its own, then it is a clause. Then it is a clause. Okay. So clauses are of two types. एक होता है independent, एक होता है dependent. So basically क्या होता है? Independent clause जो होता है वो अपने आप में पूरा पूरा मतलब आता है. So this is an independent clause. I eat an apple. There is a subject, there is a verb, and it makes sense on its own. But जो dependent clause होता है, go, yes, this is also a complete sentence. I बिल्कुल, go. I go is a complete sentence, definitely. Okay, बिल्कुल. तो screen is not visible, मैम. पता नहीं अचानक क्या हो जाता है.
Okay, okay, I'll just reshare. I think like network का कुछ problem है. No problem. So Ma'am, can you explain again what is clause? okay. One second guys, okay, be a little patient क्योंकि थोड़ा सा clause और phrases नहीं करेंगे तो फिर बाद में समझने में problem होगा. Can you see the screen, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. One second. I think I have some notes. Right, I have some notes. Right. चलिए यहाँ से देख लेते हैं, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा phrase and clause. Okay, देखिए phrase and clause are basically parts of a sentence. Okay, they are basically parts of a sentence. So phrases and clauses are basically parts of a sentence. Sentence के कुछ भाग है जिनका नाम दिया गया है phrase and clause. So phrases क्या होते हैं? Phrases are basically they include either a subject or a verb. Okay, none at all or maybe none at all. Maybe एक subject है या फिर एक verb है या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है phrase में. Okay, but clause जो है, clause includes both a subject and a verb. यही इनका डिफरेंस है. सब्जेक्ट और वर्ब आप सबको पता है. सो फ्रेज में क्या होता है, या तो एक सब्जेक्ट होता है या एक वर्ब होता है या फिर कोई भी नहीं होता है. ओके, बट क्लॉज में क्या होता है, इट विल हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. डेफिनेटली होगा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. ओके, यही डिफरेंस है फ्रेजेस और क्लॉजेस का. अगर हम फ्रेजेस में जाए, देखिए grammatical phrases are groups of two or more words that work together to perform a single grammatical function in a sentence. So ये जो phrases है, ये क्या करते हैं, group of words होते हैं, कुछ शब्द एक साथ एक group में लिए जाते हैं और वो एक part of speech का काम करते हैं sentence में. A part of speech, it functions as a part of speech. For example, अगर मैं एक sentence लिखूं, a little boy goes to school. A little boy goes to school. अब क्या हुआ देखिए, if I say a little boy goes to school, what is happening here? Goes is my subject, right? Goes मेरा, sorry, goes is my verb, right? Goes मेरा verb है. So subject क्या है? A little boy. पूरा का पूरा जो है ये मेरा subject है. So आप बोलेंगे मैम पूरा का पूरा अगर subject है तो ये subject कैसे काम कर रहा है? So इसमें क्या क्या parts of speech है? एक article है, लिटिल मेरा क्या है, एक एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, एक नाउन है. राइट, तीन शब्द है, तीनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है. बट जब हम किसी चीज को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये पूरा का पूरा जब सब्जेक्ट हो रहा है, सो सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन ही बन सकता है. तो फिर ये आर्टिकल और इस एडजेक्टिव का क्या हुआ, तब हम इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज इसका मतलब होता है ये जो तीन शब्द है, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे फंक्शन एज द नाउन ऑफ द सेंटेंस, एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इस तरीके से फ्रेजेस काम करते हैं सेंटेंस में. ओके, इसके बारे में हम और भी डिटेल्स में जानेंगे जब हम एक्चुअली फ्रेजेस एंड क्लॉजेस करेंगे. राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ simple introduction. So this is the definition of phrases basically. Yes, Malik, do you have a question? No, ma'am. Okay, so clauses on the other hand, so वहां पे आपने देखा होगा a little boy goes to school. A little boy में ना तो कोई particular verb था. Okay, there was no particular verb in the phrase. So phrase में या तो subject हो सकता है या verb हो
सकता है या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है, still it will be considered as a phrase. Okay, but clauses on the other hand are a group of words that contain both a subject and a predicate or a verb. So predicate बाद में हम समझेंगे, अभी आप समझ लीजिए कि उसमें एक subject होगा और एक verb होगा. ये very very important है, इसमें कोई question नहीं है. Okay, and दो तरीके के clauses होते हैं, एक होता है independent clause, दूसरा होता है dependent clause. Okay, so we will look at one by one. Independent clause क्या होता है? An independent clause, also known as a main clause, main clause भी बोलते हैं, is a clause that forms complete independent thought. It forms a complete independent thought. जैसे कि मैंने अगर बोल दिया he goes to the market, he goes to the market. अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें he मेरा subject है, goes मेरा वर्ब है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है. बट अगर आप पूरे सेंटेंस को एक साथ लेंगे जो कि एक क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये अपने आप में पूरा पूरा अर्थ देता है. इट इज कंप्लीटली मीनिंगफुल ऑन इट्स ओन. आई डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग एल्स टू इट टू मेक इट मीनिंगफुल, right? So if it is making sense on its own with a subject and a verb, it is called an independent clause. Okay, so it does not require anything else to be considered complete, so it can stand alone as a sentence. ये अकेले में एकदम sentence की तरह काम कर सकता है. But It contains the subject and predicate. Yes, pardon? Ma'am, it already had subject and verb in it. जी He goes बिल्कुल to the subject, बिल्कुल subject and verb तो बिल्कुल रहेगा, तभी जाकर तो meaning आएगा. क्लॉज का तो डेफिनेशन ही ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब रहना जरूरी है. विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस, राइट? यू कैन नॉट मेक अ क्लॉज. क्लॉज शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब भी रहेगा एंड इट विल मेक सेंस ऑन इट्स ओन. अपने आप में पूरा पूरा मतलब आएगा. डिपेंडेंट क्लॉज ऑन द अदर हैंड, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट डज नॉट मेक सेंस. Okay, I will give you an example. ये independent clauses के कुछ examples है, आप देख लीजिए. I refuse. They like to stay in a fancy hotel. The girl in the red jacket, ये मेरा पूरा का पूरा subject है. Ran quickly towards the bird. बस ran मेरा verb है. Okay. The Beatles were a great brand. I wish it weren't Monday. ये सारे के सारे हमारे independent clauses है. Subject है, verb है, plus उसके साथ पूरा पूरा मतलब आ रहा है. It makes complete sense on its own. So all of them are independent clauses that are functioning as sentences. Now we come to dependent clauses. Ma'am, I dance is it independent and dependent? बिल्कुल बिल्कुल independent clause, right? I dance makes complete sense on its own and it has a subject and a verb. Okay, dependent clause आप देख लीजिए, आपको clear हो जाएगा. I know because I have not talked about dependent clause, that's why you are facing problems. Don't worry. देखिए, a dependent clause also called a subordinate clause. इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या नाम था? मेन क्लॉज, क्योंकि वो मेजर है, राइट? वही मेन है, उसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता. डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं. सबऑर्डिनेट, किसी के नीचे होना सबऑर्डिनेट होता है. सो डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं. इज अ क्लॉज that relies on the information from an independent clause to form a complete logical thought. क्या बोला जा रहा है? ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको डिपेंड करना होता है. रिलाइज मींस डिपेंड. इट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर ये डिपेंड करता है कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ताकि इसको कुछ मतलब मिले, ताकि इट बिकम्स meaningful. Otherwise it cannot be meaningful. Until and unless a dependent clause is taking meaning from an independent clause, it is not meaningful. It is not completely meaningful. Understood, guys? Let me give you some examples. You guys will understand. See, whenever I travel, I like to stay in a fancy hotel. Whenever I travel में, you can see this is also an independent clause. Q, I is the subject, travel is the verb. But if I only tell you like listen Tanisha, whenever I travel, you will say, what are you saying, ma'am? It doesn't make any sense, right? So although it is a clause with a subject and a verb, it does not make sense on its own. But if I call Tanisha and I say, listen Tanisha, whenever I travel, I like to stay in a fancy hotel. So what happens? I am giving complete meaning to the sentence. This dependent clause
now has meaning because of this independent clause. This is an independent clause, right? Because it has a subject, it has a verb, and it also makes complete sense on its own. So that is why I am giving meaning to this dependent clause through this independent clause. Is this clear, guys? Bataiye. Ma'am, so Ma'am, when I will say One by whenever I one, one by travel. one. Anupam, yes? Yes, ma'am. When I will say whenever I travel, this is a independent clause. This is a dependent clause, Anupam, because it does not Dependent. make Okay. sense on its own. Okay. And when I will say whenever I travel, I like to stay in fancy hotels. Then it sentence make sentence The sentence gives meaning, right? It is meaningful meaning. now. Right. We called independence clause. No, this entire thing is simply a sentence. ये पूरा का पूरा जो है ये सिर्फ sentence है. Okay? इसको independent clause नहीं बोलेंगे. I like to stay in a fancy hotel. ये जो part है sentence का, ये independent clause है क्योंकि ये अपने आप में पूरा पूरा मतलब देता है. It makes sense on its own. Right? It gives complete meaning on its own. That is why it is an independent clause. It has a subject and a verb as well. Right? I like. But when you look at this part of the sentence, जो complete meaning देता है sentence वो हो गया independent clause. जो जी, और सब्जेक्ट और वर्ब भी होना चाहिए जिसमें कोई मतलब वर्ब भी होना चाहिए. राइट. और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है बट उसमें कोई अर्थ नहीं आ रहा है. इट डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन. अपने आप में वो अर्थ पूर्वक नहीं है तो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. सोचिए ये जो पार्ट है